Good morning, Nabin, Nikki. Very good morning to जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज बहुत लेट ही गला क्लास स्टार्ट होला बेले आज बहुत लेट ही गला क्लास स्टार्ट हेबा बेले गुड मॉर्निंग त्रिशा लेट ही गला एक्चुअली आज कहीं ना गतकाली टिके लेट ही गला सोइला बेले मु अलार्म दिए एते निद भांगिला बेले डेरी ही गला सॉरी अगेन ओके सो आम देखुले आल्डिहाइड कीटोन रे आमे पढ़ी नवा कौन कौन रही लेट्स हैव ए रिविजन पुणी समस्त को शुभ सकाळ जय जगन्नाथ मु पूर्णचंद्र पंडा सर आरंभ करिया तुमर आजिर क्लास सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग CO ग्रुप और वी कैन से RCHO जो थी आल्डिहाइड RCO एड्रेस थिले कीटोन RCHO रो सफिक्स होची L प्रीफिक्स होची फॉर्माइल यस निकी 11टा बेले जो क्लास हम सेटा रहिबो +2 सेकेंड ईयर जो माने बोर्ड अपियर करिवे माने या भितरे नवीन और त्रिशा भी अछंती फॉर देम दिस क्लास इज नॉट नेसेसरी किंतु फॉर यू इट इज नेसेसरी निकी देन कीटोन रो सफिक्स ओनी प्रीफिक्स ऑक्सो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 we get aldehyde and ketone then by means of catalytic dehydrogenation also we can get aldehyde and ketone from alcohol calcium salt of fatty acid can also give rise to aldehyde and ketone as well as the by means of Rosenmund reduction reaction we can get aldehyde in which acid chloride react with hydrogen in presence of palladium barium sulfate over hot xylene. Dialkyl cadmium react with acid chloride to produce ketone. From alkyne we can get aldehyde and ketone by means of hydrolysis, that is in presence of HgSO4. By means of ozonolysis we can get ozonide which under hydrolysis in presence of zinc dust will produce aldehyde and ketone accordingly, and Grignard reagent react with SCN or alkyl nitrile to produce aldehyde and ketone accordingly, and toluene react with chromyl chloride and CCl4 to produce benzaldehyde. This is known as ETAT reaction. Benzene plus CO plus HCl in presence of AlCl3 and COCl produces benzaldehyde. It is the Gattermann-Koch reaction. Benzene plus alkyl acid chloride will produce aromatic compound, aromatic ketone, and only formaldehyde is gas at room temperature, whereas other aldehydes up to carbon 11 are liquid, but from carbon 12 onwards all are solid. Lower aldehydes are more soluble in water, whereas higher aldehydes or ketones are less soluble in water due to steric effect. Boiling point of alcohol is more than boiling point of ketone, is more than boiling point of aldehyde, is more than boiling point of alkane due to dipole-dipole interaction and hydrogen bonding. SCN when added we get cyanohydrin, NHSO3 when added we get SO3Na, hydrogen when added we get hydrazone, then Grignard reagent when added we get alcohol, hydroxylamine when added we get oxime, hydrogen when added we get hydrazone, phenylhydrazine when added we get phenylhydrazone, semicarbazide when added we get semicarbazone. Whenever we react with 2,4-DNPH to aldehyde and ketone we get corresponding 2,4-dinitrophenylhydrazone. For aldol condensation the aldehyde must contain an alpha hydrogen
which will be the product in presence of dilute NaOH to produce the compound that is beta hydroxyaldehyde. In presence of when an aldehyde does not contain alpha hydrogen, it can undergo Kanizer reaction. This is a type of disproportion reaction, that means both oxidation and reduction occurs. So aldehyde, when aldehyde is oxidized to SCOH, which under treatment with Na will produce SCONA. Again aldehyde is reduced to alcohol, that is methanol. Similarly, reaction with PCl5, it will produce dichloroalkane plus POCl3 phosphonyl chloride. Then when we react formaldehyde with ammonia, we get urotropine, and structure of urotropine is very important. And when aldehyde is reacted with ammonia, we get aldimine. When ketone is reacted with ammonia, we get corresponding amine. By means of catalytic reduction or by means of using LiLH4, we can get alcohol from aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone undergo Clemmensen reduction reaction in presence of zinc mercury amalgam and concentrated HCl to produce corresponding alkane. Again, by means of Wolff-Kishner reduction, we can get alkane from aldehyde and ketone just by reacting with hydrogen KOH and ethylene glycol. Iodoform reaction, the condition for iodoform reaction is the compound must contain CH3CO group, and the product in iodoform reaction is iodoform. Further, by means of oxidation in presence of KMnO4, we can get corresponding carboxylic acid from aldehyde and ketone. Tollens reagent, when it is this is the ammonical solution of silver nitrate, that is diamine silver hydroxide, when it is particularly treated with only aldehyde, not ketone, because ketone has not sufficient because in ketone there are two groups, two groups which will not favor the oxidation by means of this group. So ammonium salt of carboxylic acid will be formed, and phalanx A, phalanx B will be formed. Phalanx A is copper sulfate, phalanx B is the mixture of sodium hydroxide and Rochelle salt. In this section, aldehyde, that is only aliphatic aldehyde. See here, this reaction should not occur. मन रख ये तुम बेंजाल्डिहाइड को रिएक्शन कराई, सो इट विल नॉट occur at all. So aldehyde which is aliphatic aldehyde can undergo reduction with oxidation by means of phalanx solution to produce carboxylic acid and a red precipitate of cupric oxide. Cuprous oxide. So remember, aromatic aldehyde does not undergo phalanx solution or does not get oxidized by means of phalanx solution because of this reason which we have discussed, that during benzaldehyde there is a carbon-carbon double bond and rogen and phalanx solution, that is CO2O does not have sufficient energy to break this C double bond C. That's why we cannot get a carboxylic acid sufficiently. Next, we have discussed that we had discussed for electrophilic substitution reaction in aromatic compounds. It is meta-directing for aromatic compounds, or we can say benzaldehyde is meta-directing, whereas for electrophilic substitution, but it is ortho-directing for ortho and para-directing for nucleophilic aromatic nucleophilic substitution. Okay.
This is the important point which should be discussed. Pradipta, Shubham एवं श्रावणी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो आज आम पढ़ा पे नाइट्रेशन. फास्ट वी विल डिस्कस अबाउट नाइट्रेशन अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अंडर आम देखा प्रथम नाइट्रेशन. नाइट्रेशन माने कौन ना व्हेन बेंजीन जितेबाला आमर बेंजीन बा जेकोसी गोटे एरोमेटिक कंपाउंड को जितेबाला आम नाइट्रिक एसिड सहित ट्रीटमेंट करवा, whenever we treat with nitric acid concentrated HNO3 we will get the product that is metanitro if it is a functional group like benzaldehyde, benzoic acid, etc. So I case CHO and this will be NO2 plus product, the rest product will be water. So how it came or how the product will केमती प्रोडक्ट है ना ये जो आम यार मेकानिज्म पढ़ा. सो दिस विल बी योर मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड. So if we go for the wording for this reaction, that benzaldehyde undergo nitration or benzaldehyde when treated with nitric acid in presence of concentrated H2SO4 we get metanitro benzaldehyde. ओके. सो ये आमको आउ गोटे जिनस रखा भूल जाइए. कनसेंट्रेटेड H2SO4 जार कम है ये ऑक्सीडाइज करेब. कनसेंट्रेटेड H2SO4 सॉरी कनसेंट्रेटेड H2SO4 जार कम है बेसिकली रिएक्शन को फास्टर करेब. ठीक अच्छे. ये मीडियम को एसिडिफाई कर जद्वारा इलेक्ट्रोफाइल जल्दी तुमार जनरेट हो पार. तो रिएक्शन समस्ते लिखि दियो. और ये जदि रिएक्शन रिलेटेड कहार किसी डाउट अच्छी पचार, देन वी विल गो टुवर्ड्स द मेकानिज्म पार्ट ऑफ नाइट्रेशन. समस्ते बुझीपार. डू यू हैव एनी डाउट्स? कैटालिस्ट इज द कंसंट्रेटेड H2SO4. एटी कैटालिस्ट इज द कंसंट्रेटेड H2SO4. नवीन सॉरी शुभम. तो आम देखा यार मेकानिज्म. व्हाट इज द मेकानिज्म फॉर दिस रिएक्शन? शुभम मु कहबी तुम्हें तुम सांग मानक आज जो 11टा बेले जो वीडियो अच्छी सॉरी क्लास जो अच्छी ताको शेयर कर सो दैट दे कैन आल्सो जॉइन विथ यू. मेकानिज्म रे जदि हम देखा ये 3टा स्टेप रुए. प्रत्येक तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3टा स्टेप हुए एक्सेप्ट सल्फोनेशन. स्टेप 1 रे हुए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो प्रथम स्टेप रे ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुए. आउ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हवापाई बोलिकी जनरेट हवापाई तुम हेल्प करे बहुत कंसंट्रेटेड H2SO4. सो कंसंट्रेटेड H2SO4 basically helps in generating the electrophile. How the electrophile will be generated? So this is concentrated HNO3. HNO3 माने there is a bond. How the bond is that? HNO3 जदि हम देखिबा बॉन्डिंग केस रे N गुड साइड OH डबल बॉन्ड O एमदी रही HNO3.
इज इट राइट HNO3 रो स्ट्रक्चर एमती रही पिला माने ठीक अच्छे सो वी आर गेटिंग NO2 प्लस एंड OH माइनस सो पर्टिकुलरली ए बॉन्डटा ब्रेक हो जाए जद्वारा आम कौन पाइबा NO2 प्लस एंड OH माइनस इज इट क्लियर सॉरी एटी गोटे भूल हो जाइए एटी गोटे सिंगल बॉन्ड रहिबो राइट सिंगल बॉन्ड रहिबो आ एटी प्लस चार्ज रहिबो नाइट्रोजन रो एटी माइनस चार्ज रहिबो ठीक अच्छे सो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 तो HNO3 माने आमे कहि परिबा HNO3 व्हेन एवर इट इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस रे कोन हबो ना हमर NO2 प्लस आ जो OH माइनस टा सेटा H प्लस रो प्रेजेंस रो वाटर हे कि पळेबो बा आमे कहि परिबा OH minus will be generated but it will be happen in presence of a strong acid like concentrated H2SO4 is it clear बुझी पारलो समझते step 1 did you understand बुझी पारलो समझते कारण या नहीं बहुत पिला कन्फ्यूज था सर NO2 प्लस ही इलेक्ट्रोफाइल कहीं अन्य कहीं इलेक्ट्रोफाइल कहीं कारण N आ OH भितर जो बॉन्ड थाए सेटा जल्दी भांगी जाए आ OH माइनस जेहेतु एटा बेस पार्ट थाए तेणु एसिड ताकू जल्दी एब्जॉर्ब करनी से NO2 प्लस जनरेट है अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग और टू एरोमेटिक रिंग तो ये तुम एरोमेटिक जो रिंग रही से रिंग रे तुम इलेक्ट्रोफाइल अटैक करियो द रिंग इज दिस वन इज योर बेंजाल्डिहाइड हमने केमती करथिले ना देयर इज अ डबल बॉन्ड देयर इज अ डबल बॉन्ड देयर इज अ डबल बॉन्ड CHO ओके प्लस जेतोले NO2 प्लस आसीबा NO2 प्लस आसीबा हम ऑलरेडी देखिछे जे दिस इज विच डिरेक्टिंग माने मन रखा इंपोर्टेंट नुह शुभम किंतु मेकानिज्म बुझिले ही आमे रिएक्शन रो स्ट्रेटजीटा बुझी परिबा अच्छा बेंजाल्डिहाइडटा को डिरेक्टिंग मेटा ना पारा ना ऑर्थो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजाल्डिहाइड इज विच डिरेक्टिंग मेटा और ऑर्थो और पारा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शुभम मेकानिज्म मन रखा निहाती दरकार नहीं फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स बट यू शुड नो दैट व्हाई इट हैपेंड सो कहीं केमती है कहीं क्वेश्चन आसे जे एटा कहीं केला सेटा कहीं केला ए सब रो आंसर हमको केवल मेकानिज्म रो ही जाना पड़िबो वेरी गुड शुभम नवीन लवकुश प्रेमोस निकी all have given the right answer that is meta directing तो मेटा डिरेक्टिंग माने एठी तुमे देखि परछो एई जो मेटा पोर्शन एई मेटा पोर्शन रे गोटे बॉन्ड रही ठीक अच्छे देयर इज ए डबल बॉन्ड नियर बाय मेटा सो दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द मेटा पोर्शन एंड दिस विल अटैक द NO2 प्लस इज इट क्लियर बुझी पारलो एई जो मेटा पाखरे जो डबल बॉन्डटा रही सेटा एई कार्बन पाखको शिफ्ट हो जिवो सेई कार्बन पुनी NO2 को निजर इलेक्ट्रॉन दे दबो सेठी पिला माने ऑलरेडी हाइड्रोजन भी थिला सो यू विल गेट एन हाइड्रोजन सॉरी एटी गोटे NO2 रहिबो इट विल बी NO2 एंड अनदर विल बी हाइड्रोजन तापरे एज यूजुअल एडी CHO ए डबल बॉन्ड रे किछि तो हेनी ये किछि होबनी एपटे डबल बॉन्ड किछि हेनी ये भी किछि होबनी किंतु ए डबल बॉन्ड जेहेतु ए कार्बन पळैछि ताले ए पर्टिकुलर कार्बन पाखरे तुमरो को चार्ज जनरेट हबो प्लस चार्ज जनरेट हबो एट दिस कार्बन दैट इज योर पारा कार्बन रे प्लस चार्ज जनरेट हबो इज इट क्लियर प्लस चार्ज जनरेट हबा बुझी पारछो ना जेहेतु ए बॉन्डटा ए पाख को शिफ्ट है एवं से जो पाई इलेक्ट्रॉन रा NO2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कला जद्वारा NO2 प्लस जो थिला न्यूट्रल है पुणी NO2 आ H दी जन जाक गोटे कार्बन पाखे है तो ये जो देखा गोटे कार्बन पाखे चारिटा बॉन्ड होती गोटे एपटे कार्बन पाखक आ गोटे कार्बन पाखक आ गोटे NO2 पाखक आ गोटे हाइड्रोजन पाखक फर्दर ये गोटे प्लस चार्ज जनरेट है ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा आम स्टेप 3 हूँ
deprotonation or loss of proton तो ये प्रोटोन लॉस हो ठीक अच्छे पे वार्डिंग मु डाकेनी किंतु यहाँ बहुत इंपोर्टेंट फॉर मेकानिज्म कारण यार बहुत गुटे चैप्टर रे तुम एरोमेटिक जो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड चैप्टर रे गुड़ाक आसे सो आम तो देखा ये प्रोटोन लॉस हो जाए सो यू विल गेट दैट प्रोटोन इज लॉस्ट सो हाउ द प्रोटोन इज लॉस्ट देयर इज योर ये प्लस चार्ज थिला ये डबल बॉन्ड थिला ये डबल बॉन्ड थिला ना यस ये गोटे डबल बॉन्ड ये किसी बॉन्ड नाला सॉरी ये बॉन्ड थिला ये बॉन्ड थिला CHO तो ये बॉन्ड किसी नाला राइट तो ये डबल बॉन्ड CHO आ ये दुईटा ग्रुप लगी गोटे साइड NO2 गोटे साइड H ये जो प्रोटोन रही बर्तमान OH माइनस जो आमर बाहर थिला फर्स्ट स्टेप रे ये जो बेसटा बेसिक पार्टा ये कौन कर प्रोटोन को आब्स्ट्राक्ट कर नब अर्थात प्रोटोन को निज आड़ को टाणी नब दिस विल आब्स्ट्राक्ट दिस प्रोटोन जहाद्वारा ये प्रोटोन इलेक्ट्रॉन देकी बेंजीन को पड़ेब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देकी प्रोटोन टी चलीज आउ H प्लस OH माइनस से वाटर हो फर्दर वी गॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड अगेन जहाद्वारा पुणी आउथरे आम जो देखा जमती पूर्वावस्था तुम जमीती तुम डबल बॉन्ड थिला एटी डबल बॉन्ड एटी डबल बॉन्ड एटी डबल बॉन्ड आसीगला पुणी ये NO2 आसीगला ठीक अच्छे केवल H बदल में NO2 टा सब्स्टिट्यूटेड होगला एंड प्लस वेटर सो दिस इज योर मेटा नाइट्रो ए कंपाउंड ना कौन हम मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड इज इट क्लियर बुझीपार समस्ते नाइट्रेशन एंड इट्स मेकानिज्म डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द नाइट्रेशन एंड इट्स मेकानिज्म okay next time देखिबा further we will look towards the next type of reaction that is halogenation ठीक है we will discuss about halogenation okay so 2 number is halogenation halogenation so halogen will be added here what is halogenation ये तुम हालोजेन लगे जमी से नाइट्रोक्लोरोफ्लाइक थी ये हाइड्रोजन लगे सो यू कैन राइट प्रथम आम रिएक्शन लिखिदेवा कौन हो पार रिएक्शन आउ कैटालिस्ट कौन यूज करा जाए तो दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड ठीक अच्छे बेंजाल्डिहाइड को जितेबाला आम क्लोरीन सहित ट्रीटमेंट करवा इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 वी विल गेट मेटाक्लोरो बेंजाल्डिहाइड मेटाक्लोरोबेंजाल्डिहाइड प्लस HCl विल बी बाय प्रोडक्ट ठीक अच्छे तो ये यार रिएक्शन करने पूर्व आउ गोटे रिएक्शन मु कर दूची व्हाट विल हैपन व्हेन वी react benzaldehyde with bromine in presence of AlBr3 aluminum tribromide presence रे तो हमें बेंजाल्डिहाइड को ब्रोमिनेशन करवा कौन आसीबा प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड अंडरगो हालोजिनेशन डायरेक्ट लिखिदेवा ठीक अच्छे मेटाब्रोमो बेंजाल्डिहाइड वेरी गुड श्रावणी इन प्रेजेंस ऑफ श्रावणी ये आज प्रथम आंसर देइचंती तापर सेकेंड आंसर आज नवीन देइचंती श्रावणी आज प्रथम आंसर देते लवकुश थर्ड आंसर देले बेंजाल्डिहाइड अंडरगो हालोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक सॉल्ट और एल्युमिनियम सॉल्ट टू प्रोड्यूस मेटा हालो बेंजाल्डिहाइड
मेटा हालो बेंजाल्डिहाइड आसीगला तो ये आम प्रडक्ट आसो मेटा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड बहुत बढ़िया ये प्रथम आंसर किंतु श्रावणी देइचंदी तापर पर लवकुश प्रेमोस भी आंसर देलेनी सो दिस विल बी योर मेटा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड दिस द टाइप कंपटीशन एमदी ही इंटरेस्ट बढ़े झगड़ा कहीं लगेबी आई एम जस्ट मेकिंग क्यूरियोसिटी in between you so that you can also participate more vigorously throughout the class. Okay, so आम यार मेकानिजम करनबा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप मेकानिजम रे प्रथम स्टेप कौन हम सेम रहिबो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किंतु एठी इलेक्ट्रोफाइल टा डिफरेंट रहिबो दैट इज Cl प्लस अच्छा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज Cl प्लस तो यही केस रे तुम्हारा क्लोरीन जो थिला दिस इज योर क्लोरीन दिस इज क्लोरीन प्लस FeCl3 FeCl3 इज ए गुड लुईस बेस ये कौन करिवो ना FeCl3 एठू निजर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नहीं कि इट विल abstract one electron from the sorry भूल गला जस्ट मिनट सॉरी सो FeCl3 होची गोटे लुईस एसिड फास्ट ठीक अच्छे इट इज ए लुईस एसिड सो एट फास्ट ये क्लोरीनेशन रे जिते हम क्लोरीन निजर इलेक्ट्रॉन देदेव प्रथम FeCl3 को जहाद्वारा क्लोरीन रे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आसो सी पुणी एठू इलेक्ट्रॉन टाणी नब जहाद्वारा यही पर्टिकुलर क्लोरीन रे गोटे क्लोरीन रे क्लोरीन प्लस चार्ज जनरेट हम आउ गोटे क्लोरीन रे FeCl4 माइनस चार्ज जनरेट हम ठीक अच्छे FeCl4 माइनस चार्ज जनरेट हम तो इनिशियली क्लोरीन निजर इलेक्ट्रॉन पेयर आयरन को दे दिए आयरन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant d orbital it can accept the electrons and it can form FeCl4 but the chlorine will have the positive charge further so this positive charge is again neutralized by the double bond so it becomes as FeCl4 minus and Cl plus. Next in the step 2 there will be a formation of step 2 case रे कौन हबो attacking of electrophile लुईस एसिड माने जीए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करि परिबो ताको लुईस एसिड कह जाय लुईस एसिड होची एटी FeCl3 प्रेमोस अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करिवो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रे अटैक कला अटैक जो कहना दी अटैक सेमती हाउ लुईस एसिड सर लुईस एसिड ऊपर आउ डिटेल्स बुझीवानी प्रेमोस आमे से गुडाक पर के बुझा बिकज लुईस एसिड जिनस गुड़ाक डिटेल्स रे गले बहुत गुड़ा टाइम लग केवल एति मन रख जे आयरन रे वेकेंट डी ऑर्बिटल थिबा जोगु इट कैन हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इट इज ए लुईस एसिड ओके जी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करियो ताको लुईस एसिड कह जाए फर्दर ये जो अटैक कही अनाउंसमेंट करदेला ये जे अटैक करदेला क्लोरीन को ओके 11th रे थिला यस 11th रे थिला यू आर राइट नवीन हाइड्रोजन दिस इज क्लोरीन सो दिस इज CHO मुझे गोटे भूल कली किए कहीपर मु तो करदेली आ तुम कह कौन तुमको कहवाक देली कि आउ कह जे डबल बॉन्ड यस नवीन ये नवीन प्रथम आंसर कहले बा ओके नेक्स्ट प्रोटॉन विल बी लॉस्ट प्रोटॉन एठू लॉस हो जद्वारा आमर प्रोडक्ट आसो
required product. एठी तुमर एठी जो देखिबो गोटे Cl FeCl4 माइनस थिला एठी FeCl4 माइनस रो प्रेजेंस रे सब कांड हबो सर ता आगर मु कहिछि नो तुमे प्रथमे कहिन श्रावणी नवीन ही प्रथमे कहिचंती सेटा हबनी नवीन ही प्रथमे कहिचंती बिकॉज जे प्रथमे आंसर कहंती ऑटोमेटिक तार सो हो जिवो अन्य माने को पिला माने की आगो कहिचंती श्रावणी ना नवीन अन्य माने कहलो नवीन बस मोर एथिरे फास्ट मोर शो करछि तुम पई कोडा शो करछि सेटा बड़ कथा न कारण एमिति होय कि प्रथमे तुमको सेटा शो करे किंतु पब्लिक को गोटे प्रकार शो करे श्रावणी सो छाड़ से गुडाक एमदी मैटर दैट डज नॉट मैटर लीव इट आम पढ़ा ऊपर फोकस करियो हम बेले बेले एमदी मजा कर दिए ना किंतु तार अर्थ वी आर नॉट कि फास्ट सेकेंड कहले ये प्राइज मिल जाऊने ठीक अच्छे लिव इट तो आम देखा जदि जे आमर फ्लोरिनेशन बा क्लोरिनेशन बा ब्रोमिनेशन प्रोसेस रे आमर करेस्पॉन्डिंग मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट आसुची बट रिमेंबर ये फ्लोरिनेशन आयोडिनेशन सहजरे हेनी कारण फ्लोरिनेशन हवा गले बहुत अधिक एनर्जी दरकार आयोडिनेशन प्रोसेसटा बेसी बैकवर्ड बेसी रिवर्सिबल हो जाए आयोडिनेशन इज मोर रिवर्सिबल एंड फ्लोरिनेशन हमारे बहुत एनर्जी दरकार तो यहाँ मुझे लिखौनी आई एम नॉट राइटिंग दिस बिकॉज इट इज नॉट एसेंशियल फॉर क्लास 12 टॉपिक फर्दर आम जीवा नेक्स्ट लास्ट दैट इज सल्फोनेशन 3 नंबर रिएक्शन दैट इज सल्फोनेशन sulfonation okay so sulfonation रे concentrated H2SO4 प्रेजेंस रे जेतोला हमें बेंजाल्डिहाइड को ट्रीटमेंट करिबा we will get the product that is your meta sulfonic this will be your meta acetyl benzene sulfonic acid or you can say meta benzaldehyde sulfonic acid एठी लागि जीवो SO3H प्लस H2O बाहर जीवो तो ये ना कौन हबो दैट इज मेटा the name of the compound will be meta benzaldehyde sulfonic acid okay so what is the wording for this reaction that benzaldehyde or aromatic aldehyde or ketone in the direct लिख दवा aromatic aldehyde or ketone when treated with concentrated H2SO4 बस SO3H क्वाड आसिला कहबा बी हैप्पी गुड मॉर्निंग with a concentrated H2SO4 aromatic aldehyde or ketone when treated with concentrated H2SO4 produces explain करिबी नवीन केमदी आसिला produces meta aldehyde or ketone meta carbonyl लिखि दोछ meta carbonyl जहाँ ना थिबो तार meta carbonyl sulfonic acid
तो तुम्हें कहब ये जो सल्फोनिक एसिड SO3H कुआडू आसला कहीं H2SO4 नहला। ठीक अच्छे आम जा प्रथम यार मेकानिजम पार्ट को। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेकानिजम पार्ट। मेकानिजम रे स्टेप 1 होची जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। It is quite interesting that ये जो इलेक्ट्रोफाइल रही दैट इज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल माने यार कौन सी चार्ज नहीं। सो SO3 केवल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल रही। ठीक अच्छे केमती है। सो H2SO4 जदि हम देखा H2SO4 स्ट्रक्चर ना S डबल बॉन्ड O गोटे साइड OH गोटे साइड OH आ गोटे साइड डबल बॉन्ड O। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ठीक अच्छे तो ये जो H2SO4 रही H2SO4 रे इनिशियली कौन हम ना यू गोटे गोटे साइड रू OH गोटे साइड रू H हो पड़ेब जद्वारा आमर SO3 प्लस वाटर हो बाहर जाव। SO3 विल बी फॉर्म्ड एज वेल एज ये H प्लस आ OH माइनस हो वाटर हो। तो 2 मोल्स हम निहब दुईटा मॉलिक्यूल ये निजी। ठीक अच्छे 2 मोल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H2SO4 राइट। SO3 वाला हाँ तो इट विल प्रोड्यूस तमें कहीपर यहाँ H2SO4 टा जो तुम H2SO4 जो दुईटा मॉलिक्यूल आम नवा 2 मोल्स ऑफ H2SO4 विल प्रोड्यूस SO3 as well as HSO4 minus just a minute SO3 plus water plus गोटे मिनट और भांगिले H plus HSO4 minus then यस मुझे एक्चुअली मन रखी सर SO3H कोटी रिएक्ट कला एमती मु मन रखी जे H2SO4 को भांगिले गोटे साइड रो आसीबो H प्लस HSO4 माइनस आ गोटे साइड आसीबो SO3H2 फर्दर ए दी जण कंबाइन करके हमर कोन हो जिवो H प्लस HSO4 माइनस आ गोटे साइड SO3H2 मु एमती मन रखी दिस द ट्रिक टू रिमेम्बर। तापर H2 और H प्लस मिसिकी H3O प्लस देबे प्लस HSO4 माइनस। सो इट विल बी H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस। ओके सो एटा H3O प्लस और HSO4 माइनस आसजिवो। ठीक अच्छे तुमर श्रावणी तुमको कहली ना तुमर फास्ट आसिले भी एटा तुमर कैरेक्टर शो करे किंतु मो मोबाइल रे देखिबो मोबाइल रे बा इवेन तुम्हें अन्य मानकर मोबाइल रे भी देखिबो जे प्रथम रे ताहार ही आसे जार सबुटो अधिक फास्ट रेस्पॉन्स जाई थाए। ठीक अच्छे बेले बेले आम जदि तुम मानक भितर टाइमिंग एपट सेपट रही जस्ट 2 सेकेंड तुमको ही फास्ट शो कर। सो लीव इट श्रावणी देयर इज नो इश्यू एट ऑल लीव दैट। तो ये आमर H2SO4 को H2SO4 को जो आम ट्रिटमेंट करवा आम बेसिकली कौन पाइबा गोटे साइड H3O प्लस आउ SO3 पाइबा एंड SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल। इज इट क्लियर बुझीपार समस्ते एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखा पड़ो कारण देख मु H2SO4 दुईटा मॉलिक्यूल नब गोटे मॉलिक्यूल भांगिले H प्लस HSO4 माइनस हम आउ गोटे मॉलिक्यूल भांगिले SO3H2 हम से SO3H2 केमती हम ना H2SO4 थिला ना S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O H थिला। तो ये पर्टिकुलाली तुम गोटे साइड रू OH बाहर की पड़ेब आ गोटे साइड रू H बाहर की पड़ेब। सो यू विल गेट S ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। तो ये S ट्रिपल बॉन्ड O
प्लस वाटर आसीजिवो एई वाटरटा फर्दर या को जेतले हम आयोनाइज करबा इट विल गिव राइज टू H प्लस HSO4 माइनस आल्सो आयोनाइज कले कारण एई जो रही इट कैन आल्सो गिव राइज टू लाइक दिस एमिति भी हे पारे केमती दैट यार स्ट्रक्चर जदि हम देखिबा SO SO OH OH तो एलाबोरेट जदि हम करबा ठीक अच्छे तो ये H प्लस चली जावा O माइनस दे दबा जद्वारा वी विल गेट H प्लस प्लस HSO4 माइनस कारण ये पूरा पर्टिकुलर टॉपिकटा हो ये पूराटा हो HSO4 माइनस बुझी पारलो ये जो H प्लस आउ H2 ये दी जण कंबाइन कर जिवे परस्पर परवर्ती मुहूर्त रे एंड यू विल गेट H3O प्लस एंड HSO4 माइनस इज इट क्लियर बुझी पारला समझते तांकर नेट स्लो थी सो ए छाड़ से जिनस को आर्ग्यू करनी डोंट आर्ग्यू ऑन दैट टॉपिक ओके लीव इट मुझे नहीं क्या ना ने किए फास्ट सेकेंड कह रही हईरानी ओके लीव इट सो कम टू टॉपिक बिकॉज इट इज एसेंशियल स्टेप 1 रे आमर जो जनरेट है इलेक्ट्रोफाइल होची सब बड़ इंपोर्टेंट दैट SO3 इज जनरेटेड ओके नेक्स्ट स्टेप 2 जीवा में स्टेप 2 रे व्हाट विल बी फॉर्म्ड स्टेप 2 रे अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करिवो बेंजीन रिंग रे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करिवो SO3 बेंजीन रिंग रे ओके सो इट विल बी बेंजाल्डिहाइड बा तुम तुम मान भितर बढ़िया सब माइंड मेकअप कर देलानी हो ओके ओके ठीक अच्छे बढ़िया कथा दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड जिते SO3 सहित रिएक्ट करिवो SO3 होची गोटे इलेक्ट्रोफाइल रिमेंबर दिस इज द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 इज द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल फर्दर इट विल रिएक्ट विथ सॉरी ए बॉन्ड एपट को शिफ्ट होबा SO3 एपट को शिफ्ट होबा सो यू विल गेट द कंपाउंड लाइक दिस एठी एवं SO3 माइनस आसीजिवो SO3 माइनस चार्ज आसीजिवो कारण जिते इलेक्ट्रॉन SO3 गोटे न्यूट्रल स्पेसीज जिते इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे ये नेगेटिव हो जाए तो यार रीजन अच्छे यहाँ न्यूट्रल हेले भी कहीं तुम इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज यार वेकेंट ऑर्बिटल अच्छी ऑक्टेट रूल फिल अप न कर इट कैन हैव द टेंडेंसी टू हैव द इलेक्ट्रॉन टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे नेक्स्ट हम देखा स्टेप 3 स्टेप 3 रे कौन हम लॉस ऑफ प्रोटॉन हम लॉस ऑफ प्रोटॉन फॉलोड बाय बट ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन कहले आउरी बहुत भल हम स्टेप 3 नहले या को लॉस ऑफ प्रोटॉन करके लिखियो जदी हम तुम्हें स्टेप 3 देखिछ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन लॉस ऑफ प्रोटॉन ही लिख तापर पुणी आउथरे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करके आउथरे लिखिबा लॉस ऑफ प्रोटॉन लिख प्रोटॉन एठी लॉस हे जिवो गोटे को प्रोटॉन टा लॉस हे जिवो दैट डबल बॉन्ड CHO जो थिला एंड हियर इट इज SO3 माइनस एटी जो H थिला हाँ एटी मु कार्बोकेटेन छाड़ दे चिल्ली भूल रे एटी प्लस हबा फर्दर एटी प्रथम स्टेप रे तुम्हारा एटी प्रोटॉन लॉस हे जिवो सो प्रोटॉन विल बी लॉस्ट एंड व्हिच विल रिजल्ट द प्रोडक्ट that is SO3 minus and 80 double bond 80 double bond I think प्रथमे प्रोटॉन लॉस हाँ नेक्स्ट स्टेप 4 रे कौन हम ये तुम्हारा प्रोडक्ट आसीनी स्टेप 4 पुणी आउथरे हम स्टेप 4 रे पुणी आसीबो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन जो H3O प्लस रे जो प्रोटॉन थिला बा एसिड पार्ट थिला which is a strong acid प्रोटॉन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हम तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हेले केमदी कौन हम
दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड CHO SO3 माइनस थिला. फर्दर इट विल abstract the H plus from the water, H plus water that is your H3O plus. H plus water माने ताको आजिबो H3O plus. ठीक अछि. H3O plus रो प्रेजेंस रे से कोन करिवो ए जो H plus गोटी को abstract करि नबो. abstract करि नबा द्वारा एठी तुमारो SO3 माइनस गोटी H plus को abstract करनबो जो माइनस चार्जटा सी H plus को abstract करिया द्वारा न्यूट्रलाइज हो जिवो. फर्दर यू विल गेट SO3H. ठीक अछि. and this is benzene CHO. so this will be your meta benzaldehyde sulfonic acid. is it clear? बुझी पारला समस्ते. meta benzaldehyde sulfonic acid सब गुटाक स्टेप बुझिला. स्टेप 4 जाए. इज इट क्लियर? बुझी पारला पिला माने? यस सर. ठीक अच्छे. एटा एंट्रांस ओरिएंटेड टॉपिक भी आसपारे तो से कहीदेली बहुत भल हम. ना 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 नवीन SO3H फास्ट रु ही अटैक कर ना. SO3H जदि प्रथम रु ही अटैक करदेव हेनी. कारण SO3H अटैक कले SO3H प्लस हो जोटा कि अनस्टेबल हेनी सेमती. नवीन जदि हम देखा बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रथम थर पर मत किए जड़े एमती क्वेश्चन पचार तो SO3 माने H2SO4 स्ट्रक्चर ही आम कहीपर जेटा हम कि ना. ठीक अच्छे. दिस द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4. तो जदि आम SO3H कहीदेवा SO3H प्लस कहवा SO3H माने एठी जो प्रोटोन गुड़ाक रही दिस इज हाईली एसिडिक. ए प्रोटोन गुड़ाक एसिडिक से यार बेसिसिटी 2 H2SO4. ठीक अच्छे. हाईली एसिडिक होता जो ये कौन हम ना तुम्हें कह जे सार SO3H माइनस माने ये पलैला जद्वारा व्हाट इज गेटिंग हियर S डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड OH. तो यहाँ HSO3 माइनस तो यहाँ जिते अटैक कर अटैक कला माने यही पार्टा आसिक बेंजीन सहित अटैक कर माने बेंजीन रे कहा सहित तुम ये बॉन्ड O सहित O तापर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH. कि एग्जैक्टली एमती हुए इन केस ऑफ योर SO3 रे एमती हुए. SO3 केस रे बेंजाल्डिहाइड कौन करिवो ना सल्फर सहित ट्रीटमेंट करिवो. ठीक अच्छे. S डबल बॉन्ड O एटा HSO4 डबल बॉन्ड O SO3 एटा HSO4 हो गला ना. अच्छा HSO4 हो गला. हाँ ये एमती भी राइट ठीक एटा HSO4 हो गला. HSO4 माइनस एमती भी तापर भी SO3H बाहर करार अच्छी. SO3H माने आमको ए O माइनसटा रिलीज करार अच्छी. O माइनसटा केबे भी रिलीज हेनी. रिमेंबर दिस O माइनस विल बी नॉट रिलीज वेरी इजियर. तो SO3 जो होता सल्फर ट्राइऑक्साइड पर्टिकुलरली जो हम देखा S ट्रिपल बॉन्ड O सल्फर जो हम देखा ये ये जो थिला सल्फर वेकेंस ऑर्बिटल थिबा जो बेंजीन डायरेक्ट या सहित इलेक्ट्रॉन डोनेट कला जद्वारा आमर जो प्रोडक्ट आसीबो फर्दर CHO एटी S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. सो SO3H ये भाया प्रोडक्ट एक्चुअली होइछ किंतु ये भाया प्रोडक्ट हेनी. ध्यान देकी देख नवीन. ठीक अच्छे. ये भाया प्रोडक्ट हेनी एमती. यहाँ तो HSO4 माइनस हो गला एमती हम ना.
ठीक अच्छे आउ ओ माइनसटा सहजरे रिलीज हो पार ना ये जो ओ तुम कह सर मु OH माइनस रिलीज करदेवी हाइड्रोजेनटा रही OH माइनस कर रिलीज करदेवी रिलीज करदेला भी इट विल बी नॉट इजियर माने एत सहजरे OH माइनस रिमूव हेनी जदि H प्लस न रिमूव हो ठीक अच्छे इट विल बी नॉट इजियर सो इट विल नॉट हैपन सो ओके आम देखा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट्स यूजेस ऑफ aldehyde and ketone यूजेस ऑफ aldehyde and ketone uses of aldehyde and ketone okay ठीक अच्छे aldehyde ketone रो यूज कौन कौन रही फर्स्ट वन इज 40% aqueous solution of 40% aqueous solution of formaldehyde माने फॉर्माल्डिहाइड रही 40% आउ 60% रही पानी बा वाटर 40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin ताको हमें formalin कहू is known as formalin and it is used as disinfectant and germicide disinfectant माने इन्फेक्शन करेबनी सहजरे जद्वारा या को आम बहुत जिनस प्रिजर्व करने भी यूज कर परिबा डिसइनफेक्टेंट एंड एज जर्मिसाइड माने जर्म जो गुड़ाक तैयारी हुई से गुड़ाक भी ये खत्म कर दिए सो फॉर्मालिन जिते आम यूज करिया बेसिकली इट इज हाईली रिएक्टिव ऑल्सो हेल्थ पाए हेजाडियस जदि तुम्हें पाटे पकईदेल ताले गला फर्दर फॉर्माल्डिहाइड रो यूज कौन फॉर्माल्डिहाइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बेकेलाइट कमा डिफरेंट पॉलीमर्स विभिन्न प्रकार पॉलीमर माने कौन कहवा पॉलीमर माने जेहेतु बहुत पिला आज क्लास 11 रो जो माने 12 को भी प्रमोट होती पॉलीमर माने आम कहीपर पॉलीथीन गोटे पॉलीमर तो जोटी बहुत संख्यक रिपीटेड यूनिट थी ताको आम पॉलीमर कहवा तो पॉलीथीन भाया बोले मन रखि दियो बर्तमान पॉलीमर रो डिटेल्स तुम्हें पढ़ो नेक्स्ट बेंजाल्डिहाइड इज फ्लेवरिंग एजेंट is used as flavoring agent फ्लेवर देवाई भल गंध देवाई फ्लेवरिंग एजेंट हिसाब से बेंजाल्डिहाइड यूज करा जाए एसीटोन नेल पॉलिश रिमूव करने एसीटोन इज यूज्ड वाइडली यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर ता सहित आहरी बहुत जगह रही जोटी भी टी मैला रही जाए जोटा को हाथ पहुँची पारे सेटा को एसीटोन सफा कर दिए तापर एसिटोफेनॉन इज यूज्ड एसिटोफेनॉन इज आल्सो यूज्ड एसिटोफेनॉन इज आल्सो यूज्ड एज acetophenone is also used as flavoring agent okay so it is all about the total classes of aldehyde and ketone aldehyde ketone एटी पिला माने सरी गला आसंता काली आमे aldehyde ketone रो किछि रिएक्शन पढ़िबा दोज आर योर आमे कहि परिबा से aldehyde ketone रो रिएक्शन गुडा को जोटा कि कंप्लीटली माने थिबो दिस आर बेसिकली योर फ्रॉम कौन कहवा जे जो गुड़ाक पूरा चेन रिएक्शन थी aldehyde ketone रो चेन रिएक्शन थी ओके सो वी विल डिस्कस aldehyde ketone रो चेन रिएक्शंस ऑफ aldehyde ketone जोड़ा आम आसंता काली पढ़ा जोड़ा एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट आसंता काली पढ़ले सरीज तो आज भी किसी होमवर्क रहुनी
ठीक अच्छे केवल रिविजन करिथाओ आ फुल पाठटा को देखिए आस्थाओ ऑर्डर भी हम येस आम ऑर्डर पर भी यूज कर गंध पर भी यूज कर फ्लेवरिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज योर ऑर्डर एजेंट ऑर्डर गुड ऑर्डर पर भी आम यूज करवा क्या एसिटोफेनॉन को पिला माने ये जो जिनस जहाँ आम पढ़ीचे ताकू टिके डिटेल्स रे देखिए आस्था आसंदा काली पई आसंदा काली देखिबा कहार आंसर होछ को माने आंसर करि पारुछ ठीक अछि आमे आसंदा काली मु नै कि आसुची तुमरो ऑर्गेनिक दैट इज योर चेन रिएक्शन आल्डिहाइड कीटोन रो सो ऑर्गेनिक चेन रिएक्शन आल्डिहाइड कीटोन यस 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 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मोरो मोरो मने नहीं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पिला माने इट विल नॉट फेवर नोट सर आज जो फास्ट क्लासटा हम सब चैप्टर की यस शुभम आज 11टा बेले जो क्लास हम से सब चैप्टर को बेस करिकी नोट पिला माने मन रख बेंजाल्डिहाइड एटा इम्पोर्टेंट पार्टा जोड़ा लबको मन पकड़े बेंजाल्डिहाइड डज नॉट करेस्पॉन्ड टू फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एंड एसिलेशन कहीं हुएनी तो प्रथम आम देखा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन माने बेंजीन जितेबाला तुम CH3Cl अल्काइल क्लोराइड सहित रिएक्ट करिवो सेतेबाला इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3 it will produce the chlorobenzene मेटा डायरेक्टेड होइथिवो एटा जदि जहाँ भी ग्रुप थिवो सॉरी इट विल प्रोड्यूस टॉलुइन प्लस योर HCl बाय प्रोडक्ट टॉलुइन हो टॉलुइन आमर प्रोडक्ट होगी बाहर तो ये CH3 प्लस हूँ इलेक्ट्रोफाइल रिमेंबर क्लोरीन बाहर की पड़े CH3 प्लस हम इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल आसिक ये अटैक करवा इजी हम सेमती फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन माने कौन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन माने ये CH3CO प्लस जेनेरेट हम CH3COCl थी एसिटाइल क्लोराइड ये कौन हम पर्टिकुलाली ना तुम क्लोरीन चलीज ओके क्लोरीन चलीज द्वारा ये कार्बन रे प्लस चार्ज जनरेट हम दिस कार्बन विल हैव पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली सो पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज अगेन जद्वारा ये भी तुम कौन हम ना एसिटोफेनॉन क्रिएट हम बेंजोफेनॉन क्रिएट हम मन रख बेंजोफेनॉन रो एटा गोटे प्रिपरेशन जोड़ा तुम्हें अल्काइल हैलाइड और आरआइल हैलाइड रे पढ़ी पारना सो दिस द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिटोफेनॉन रो एटा गोटे प्रिपरेशन मेथड भी एसिटोफेनॉन रो प्रिपरेशन एटा सो दिस योर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसिलेशन दिस देन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन एटा को फ्रीडल क्राफ्ट शॉर्ट फॉर्म रे लिख दोची फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एटा को एसिलेशन दिस द एक्चुअली रिएक्शन किंतु बेंजाल्डिहाइड ए रिएक्शन दबनी तुम कह बेंजाल्डिहाइड कहीं देलानी कहीं दबा कथा तो एमती ना जदि आम देखा ये जो बेंजाल्डिहाइड अच्छी ना एटा तो आम ऑलरेडी देखिए बेंजाल्डिहाइड इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो यार इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हबारु एठी तुमार बेंजीन रु इलेक्ट्रॉन टाणी निए आम ऑलरेडी पढ़ीचे बेंजीन रु इलेक्ट्रॉन टाणी नबा कारण ही तुमार मेटा पोजिशन रे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक होतिला आम एटा देखिचे भी तो यही जिनसटा जो बेंजीन रु इलेक्ट्रॉन टाणी ही जाए जब आमर CH3 प्लस अटैक करे एठी CH3 प्लस कहा सहित ना ये जो मेटा पोजिशन रे अटैक करने परिवर्ते O माइनस रे जाके अटैक करनी माने ये आसिक ए पाखे अटैक करनी बेंजीन रो रिंग इलेक्ट्रॉन दबा परिवर्ते ये एपटू इलेक्ट्रॉन टा दे दिए एटा हवा परिवर्ते सी एपटू O माइनस आसिक इलेक्ट्रॉन ता सहित अटैक हो जाए जद्वारा आमर प्रोडक्ट कौन हो जाए परवर्ती मुहूर्त में COCH3 हो जाए इथर हो जाए H हम
फर्दर ये डबल बॉन्ड आसीबो सिंगल डबल बॉन्ड पुणी आउथरे ये लॉस करिवो एठी तुम्हारा इट विल लॉस द अगेन द दिस विल लॉस पुणी आउथरे ये ऑक्सीजन निजर इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो पुणी ये एठी आउथरे रिंग को आसीबो नेक्स्ट स्टेप रे पुणी आउथरे CH3 लॉस हे जिवो जा द्वारा तुम्हारा आउथरे प्रोडक्ट आसीबो डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग को पास जीवो सो CH डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन रे पॉजिटिव चार्ज CH3 पुणी ऑक्सीजन रे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होबारु ये कौन करिवो पुणी आउथरे CH3 को बाहर काट दबो जा बाहर मो पाखे पॉजिटिव चार्ज हेले मु रखिबि तते कहि बाहर कर दबो C डबल बॉन्ड OH ए जीवो बेंजाल्डिहाइड प्लस CH3 प्लस हे जीवो तो कहया गले जेमिति को सेमिति थिला तो CH3 प्लस किछि एठी काम को हेला नाही तो यही साइड रे भारी रिएक्टिव होबो ऑक्सीजन रे एज कंपेयर टू दिस बेंजीन रिंग प्रथम रीजन सेकंड रीजन आछि एठी आमे जदि देखिबा बेंजीन रे CH3 होछि गोटे प्लस साइड डायरेक्टिंग ग्रुप CH3 होछि प्लस साइड डायरेक्टिंग ग्रुप किंतु क्लोरीन बा नाइट्रो क्लोरीन जो थिला नाइट्रो ग्रुप भी थिला बा इवन तुम्हारा अन्य ग्रुप भी थिला जोटा दैट इज योर SO3 एगुड़ाक थिले तुम्हारा माइनस आई डायरेक्टिंग ग्रुप दिस आर माइनस आई डायरेक्टिंग माने इलेक्ट्रॉन रिसीव करथिले रिंग रो इलेक्ट्रॉन टाणु थिले माइनस आई समहाउ दिस आर माइनस आई डायरेक्टिंग ग्रुप तो माइनस आई डायरेक्टिंग ग्रुप थिबारु एडा स्टेबिलिटी भलो दउथिला बट एज इट इज ए प्लस आई डायरेक्टिंग ग्रुप एडी स्टेबिलिटी कमी गला प्लस आई डायरेक्टिंग होबा जोगु एडी स्टेबिलिटी कमी गला तार अर्थ हमें कहबा जे इलेक्ट्रॉन को पंप आउट कला इलेक्ट्रॉन पंप आउट करिवारु एडी कार्बन रे एडी तुमारो कार्बोकेटायन जनरेट हला तो कोन हला जिंसटा हमें जो देखिबा CHO सपोज इलेक्ट्रॉन धरि की पळेला CHO इलेक्ट्रॉन धरि की पळेला एडा माइनस चार्ज सपोज CHO रे रहिछ देयर इज माइनस चार्ज आ एटी डबल बॉन्ड हे जाइछ एटी सिंगल बॉन्ड अछि एटी पुणी तुमारो अटैक कर देला CH3 ए पाखरे प्लस चार्ज अछि एटी H अछि तो परवर्ती मुहूर्त रे एटी CH3 इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप हवा जोगु इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप हवा जोगु ये कौन करिवो ए जो प्लस चार्ज रहिछि ताकू माने न्यूट्रलाइज करिया को चेष्टा करिवो जा द्वारा परवर्ती मुहूर्त रे CH3 इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप हवा जोगु एटा समहाउ एटी जो प्लस कैरेक्टर थिवो न्यूट्रलाइज हे जिवो सो दिस प्लस कैरेक्टर गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड इजीली neutralizes the plus character ए जो पॉजिटिव कैरेक्टर रही CH3 प्लस आई ग्रुप थी जो इलेक्ट्रॉन ये तुम्हारा न्यूट्रलाइज कर दिए न्यूट्रलाइज कर देवा द्वारा कौन हम ना बेंजीन रे एरोमेटिसिटी आउ रिटेन हम ना बेंजाल्डिहाइड जहाँ एरोमेटिसिटी थिला सेटा पूर्व अवस्था को आसीबो ना कारण ये प्लस रे आ तो प्लस चार्ज सरुनी जेहेतु ये आउ फर्दर एमदी CH3O माइनस होगी रोचे CH3 होगी रोचे पुणी ये हाइड्रोजन रोचे एटा प्लस चार्ज धीरे धीरे कमिकी प्लसटा पूरा फेंट हो ठीक अच्छे कमी जाऊँ सो यहाँ फेवर करूनी फॉर एरोमेटिसिटी को ये फेवर न करथिबा जोगु इट विल नॉट शो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन very important why it does not show Friedel Crafts alkylation and acylation particularly asked in NEET or JEE level questions okay is it clear बुझी पाला समझते हैं मु कहबी तुम्हें 2 रु 3 थर देख जदि तुम प्लस आई माइनस आई कॉन्सेप्ट गुड़ा क्लियर नहीं तो कारण एगुड़ाक कम्प्लीटली रिलेटेड टुवर्ड्स फर्स्ट ईयर ठीक अच्छे तो समहाउ बहुत जन पिला न भी बुझी पारती जो मैंने फर्स्ट ईयर कॉन्सेप्ट क्लियर ही ना प्लस आई और माइनस आई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एप्लिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एगुड़ाक जो मैंने पढ़ी नथिबे ए जिनसटा बुझी न पारिबारे बुझी पारिबारे असुविधा हबो किंतु रिमेंबर एटा हमर सिलेबस पई किछि असुविधा नै प्लस 2 सेकेंड ईयर सिलेबस पई विशेष असुविधा हबनी जो माने भी पढ़ी ना तब तुम्हें यूट्यूब रे हो बा नेट रो आउरी डिटेल्स रे भी बुझी पारिबो ओके थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द क्लास थैंक यू Oh, wow.